Hi, I'm Dr. Ruhullah. I'm a pediatrician and now doing a neonatology fellowship in Chicago, in USA. Assalamu alaikum, good afternoon. This is Samir, in charge for Spectrum Family Clinic and Diagnostic Center, Malakpet, Hyderabad. आज मैं आप लोगों को बड़े डॉक्टर से मुलाकात कराऊंगा। हम लोग सब यहाँ एक साथ जमा हुए हैं कुछ कोविड रिलेटेड बात करने के लिए, जनरल टॉपिक, जनरल हेल्थ केयर, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन और डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट इस चीजों में क्या है उसके लिए बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सारा है। डॉक्टर सारा एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। शी इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड शी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे स्पेक्ट्रम क्लिनिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद एंड नाइस वेलकम टू यू बिकॉज इन योर शॉर्ट विजिट टू इंडिया, आपकी छोटी सी ट्रिप में आप यहाँ पर अपना टाइम दिए हैं। थैंक यू सो मच। स्पेक्ट्रम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है मैडम। इट इज अ वेरी नाइस गेस्चर फ्रॉम योर साइड, आप टाइम दिए। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज आई नो यू आर बिजी। सो जस्ट आप अपने जो एक्सपीरियंसेस है यूएस में ये पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 और यहाँ के हाल क्या है, विल जस्ट डिस्कस ऑन दैट and apart from that how it is related to diagnostics को बात करेंगे। तो डॉक्टर इलिया सर, थैंक यू सो मच, आप भी आए सर। सो एक्चुअली इट्स ए स्मॉल जनरल हेल्थ टॉक, कोई सीएमई या कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, इट्स ए हेल्थ टॉक wherein we'll be talking on many subject। मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर सना रुहुल्ला मैडम आपसे ये है कि सी इंडिया हैज सीन कोविड फेज 1, कोविड फेज 2, नाउ वी आर हियरिंग रिसेंटली one more variant is coming। ये कब तक चलेगा, ये आखिर कब इसका एंड होगा? बिकॉज हर टाइम जब एंड होने की कोशिश हो रही है, it is coming once again। So first, thank you for having me. So the viruses generally don't disappear on the face of the planet, right? I believe there's only one that's completely eradicated, which is smallpox. What will happen as time, it will become either less, it'll become weaker, and we will develop better vaccines and medications to take care of it. For example, from influenza, right? It was many centuries ago where they had influenza, and it was similar to our COVID, and it still exists. We still see different variants of influenza, and we still get vaccinated for influenza. So it's just influenza part 2. So you mean to, it's like an addition part. It will come again and again. We need to take. We need to take our precautions. So in India, we have seen a series of vaccination का एक phase चल रहा है। Government is taking stringent action. They are trying to implement everybody get covers under vaccine dose. Still, a big vacuum, lacuna is there in between, wherein people need to understand the importance of vaccine. What about in US? We have seen it is 100% vaccinated. I can't say 100% vaccination is there. There's lots of hesitation for vaccination, especially among my field in pediatrics, where parents do not want to vaccinate children. But as physicians, we urge for the protection of the child, protection of the family, that everybody gets vaccinated. I am a mother as well, and I have vaccinated my 8-year-old daughter the moment the vaccine was approved. So, alhamdulillah, she's been well. And when they approve for my son, when he turns 5, he will get vaccinated as well. So I urge everybody to get vaccinated, especially in India when we saw so many deaths. It's not like we have the capacity to take care of every citizen here. Unfortunately, the beds get overwhelmed. So one of the best ways is for protection. You're protecting yourself from with the vaccine. So we truly understand your point, and also we should emphasize on this. Yes, we are still in the phase, but because of many factors, it is still at large. Anyway, it will happen soon. Madam, I would like to hear something. See, diagnostic requirement is not actually possible in COVID management. See, for identifying COVID, we have certain tests. So basically, CT scan is there. Basically, COVID profiles are there, just to rule out the presence of vaccine and the positivity of the report. Are the same procedures being followed in US? Very much so. We are testing very often. We try not to test asymptomatic. In pediatric population, we're forced to test because they don't allow the children back in school.
unless they've tested. So we test very often. Yes. Now here one more thing, like slowly the life is regaining its own normalcy in India. Basically after 2 lockdowns, okay, when it was a complete lockdown, we had faced a lot of difficulties in education systems. Slowly people are becoming little normal and they are sending kids to the school. Here still it is a taboo. Still it is a taboo. We need to have a face mask. We need to wear all those things. We need to take care of ourselves. Are the same thing happening there also? Yes, we're very happy to finally be able to send our children to school because they've missed out on quite a year, almost year and a half of education. So we're very happy to send them to school, but we're taking our precautions. They should be wearing masks, but recently they've decreased the mandate. They've said that it's optional. If you want to wear it, you can. If not, you don't have to. We're going to see what effect that plays on society because it's a relatively new mandate and vaccinations are important. So, I mean, we're very much pushing towards everyone being in school. Madam ji, India में अभी children को vaccination का active program नहीं है. Yes sir, I would like to hear from you कि बच्चों का vaccination अभी age gap शुरू नहीं हुआ. Now they have started for 18, for 15 years. For 15 years. Okay. 15. Started the vaccine for 15 to 18 years, I think. Okay. But even then, It's not that emphasis is given. अभी Yeah. बच्चों को नहीं करा रहे हैं. parents are more hesitant That is all. because once the vaccine is launched, there will be a research of 4 to 5 years. Correct. So that's the reason parents are Little hesitant actually. more hesitant Okay. towards it, whether to give or not. Okay. It's more of compulsion, I think. Yeah, it's a more of compulsion rather than from their heart. Okay. Understood. Sir, madam, I would like to hear from you. Like for the infants, and now we are hearing many rumors and lot of stuffs are coming out. Like for infants also, there is a possibility they will get COVID. Is it true? Yes, newborns recently we're seeing don't get very affected. We've tested many newborns that are born to mothers with COVID, and majority of the time, almost 95% of the time, they test negative. The best part is when the mother gets vaccinated herself, and those antibodies are being found in breast milk, and that baby will receive that protection. So that's another very important thing about the vaccine is that you're eventually protecting your newborn. That's very excellent. That is very nice to hear, madam. Still, we have a long way to go here. Our cadre is just now how Dr. Elias has told. Now they are permitting 15-year-old also, but still it is not that much active and it will take a lot of time. So, Dr. Sarah, would you like? Prevention is better than cure. If we expect a new wave, what are the measures that can be taken to recover? Thing is for protection is masks, right? Hand washing, hygiene, right? If you have symptoms, stay home. Don't spread it to everybody. Large gatherings, don't have large gatherings, right? It's very hard for us, unfortunately, but those are the basic protective measures. I would like to say thank you very much for being a part of this thing. Actually, our intention was just to hear from you because since you are from US, we need to upgrade ourselves. We need to update ourselves. Thank you so much for attending, madam. It has been a pleasure, and we are having pride. It's a matter of privilege for us. Thank you so much. Dr. Elias, thank you for part of these things. Okay, small. So we will, as a part of our routine practice, Spectrum usually do all type of academic programs wherein we perform health camps, we give shows, we participate in CME health talks with a certain subject. See, earlier, last year, we have done for PCODs, a talk on PCOD by the team of gynecologists, and also we have done on breast cancers, importance of mother milk for the babies, so etc etc. So I just want to say that this type of initiatives are taken by Spectrum, and inshallah this will go on. So we just want to not only treat, diagnose or investigate the people, also it is a paramount responsibility of each and every individual in the society to spread the extent of their knowledge to others so that everybody gets the benefit of it. So inshallah, with Allah's willing, we will continue the same thing.
So once again, thank you so much, ladies and gentlemen, for being with us. Thank you, Sarah. Thank you for your time. Thank you, madam. Thank you so much. Always. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं मोहित समीर, डायरेक्टर स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मलकपेट हैदराबाद, आपको तहे दिल से खुशामदीद करता हूं। आज मेरे क्लिनिक और लैब पर काफी मशहूर डॉक्टर्स तशरीफ लाए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Dr.Sanah Ruhullah, MD, Pediatrics, Fellowship in Neonatology, शिकागो मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए हैं। इंडिया के शॉर्ट विजिट पर उनकी हमारे साथ बहुत पुरानी एसोसिएशन है और वो स्पेक्ट्रम को विजिट किए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन किए हैं कोविड पैंडेमिक के बारे में, कोविड के पोस्ट इम्प्लीकेशंस के बारे में, बच्चों की सेफ्टी के बारे में बहुत सारी चीजें बोले हैं जो कौम के लिए बहुत उम्दा है, जरूरी है। आपको तो मालूम है स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर शुरुआत से 2.5-3 साल से पब्लिक की खिदमत में हर महीना, हर 15 दिन कुछ ना कुछ स्कीम्स, फ्री सर्विसेज लाता है, करता है और पब्लिक को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कहां पर है ये स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड मेन रोड पे मून फंक्शन हॉल के बाजू है। ये इजीली एक्सेसिबल स्पॉट है, बहुत इजी एड्रेस है और यहाँ पर काफी चीजों का टेस्टिंग, लैब, स्कैनिंग, अदर फैसिलिटीज होते हैं। इसके और दूसरे लैब के बीच डिफरेंस यही है, ये एक चैरिटेबल इनिशिएटिव है। यहां पर पहले रेट्स कम है और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40% का डिस्काउंट है, कम रेट्स है, स्पेशली वाइट रेशन कार्ड वालों के लिए, गरीबों के लिए, जो बाहर नहीं मिलता है स्पेक्ट्रम वो देंगे। जैसा मैंने आपको सालों साल से बोलते आ रहा हूं, मैं पब्लिक की खिदमत में आज हूं, हमेशा हूं। स्पेक्ट्रम का यही इनिशिएटिव है कि क्वालिटी डायग्नोस्टिक केयर, मेडिकल फैसिलिटीज एक कॉमन मैन के रीच में होना है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्टर्स, मेरे मेडिकल स्टाफ, मेरी मेडिकल टीम ये 24/7 ये चीज में लगे हुए हैं कि पब्लिक की खिदमत हो। अगर कोई पेशेंट नहीं आ सके आपके पास तो आपका स्टाफ घर पर भी विजिट करेगा टेस्ट के लिए? स्पेक्ट्रम लैब की एक खूबी है कि खवातीन, लड़कियां और बुजुर्ग लोग अपने घर से ना निकले, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। वो लोग मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मुझे कॉल करें और टेक्स्ट से डिटेल्स दें। मेरी टीम उनके घर जाएंगी, फ्री इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, फ्री ब्लड सैंपल लेंगे और घर पर भी उतना ही डिस्काउंट उनको मिलेगा, उतनी ही फैसिलिटी उनको मिलेगी जितनी लैब पर मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है और ऐसी चीज दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगी। आप हैदराबाद में से कहीं से भी मुझे कॉल कीजिए, मैं आऊंगा, मेरी टीम आएंगे और इंशाल्लाह वी विल डू द नीडफुल। कौन से टेस्ट आएंगे और स्कैनिंग भी है? लैब के पूरे टेस्ट अवेलेबल है मेरे पास, मेरे अपने लैब में। जैसा मैंने आपको बोला है 30 से 40% डिस्काउंट आपको मिलेंगे और स्कैनिंग में, स्पेशली अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है। एक, लेडी रेडियोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर है अपने खवातीन के लिए, लेडीज के लिए। दूसरा, यहां के जो रेट्स हैं कंपेयर टू अदर डायग्नोस्टिक सेंटर ऑलमोस्ट 40-45% कम है। तीसरा,
इमीडिएट रिपोर्टिंग सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वर्क विद एक्यूरेट रिजल्ट्स। मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं जो स्कैनिंग करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल। ये स्कैनिंग की फैसिलिटी है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर 9581313167। आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आज हम जो ये प्रोग्राम रखे हैं हेल्थ टॉक, ये हेल्थ टॉक का मेन रीजन यही है कि डॉक्टर्स आए हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने अपने मेडिकल एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सना रूहुल्लाह जो यूएस से आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैडम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, प्लस डॉक्टर इलियास साहब जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो काफी मशहूर डॉक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, गरीबों की बहुत सारी उम्दा खिदमत करते हैं। और डॉक्टर सारा जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, जो स्पेक्ट्रम के एक पैनल डॉक्टर है, उनका और मेरी मेडिकल टीम का मिस्टर रहमान, नाज और महबूब, नसीम, ये सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टाइप ऑफ एक्टिविटीज इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। हर मंथ, हर वीक, हर 15 दिन में कुछ ना कुछ फैसिलिटी स्पेक्ट्रम से निकलेंगे। रमजान स्पेशल कुछ ऑफर है आपके? रमजान के लिए खास एक ऑफर है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% से 40% डिस्काउंट पूरे लैब टेस्ट पे दिया जाएगा पूरा 1 महीना। और खुसूसन सहरी के बाद लैब जल्दी ओपन होगा, लैब के टाइमिंग में भी तब्दीली होगी, लैब 7 o'clock से वर्क होगा ताकि हम रोजदारों की, हम दूसरे लोगों की खिदमत उम्दा तरीके से करें। लैब के टाइमिंग और जल्दी हो जाएंगे ताकि इफ्तार के टाइम पब्लिक को डिस्टरबेंस ना हो, पब्लिक को तवील ना हो, हम ये कोशिश करेंगे। फिजा एक्सक्लूसिव पर चल रहा है बेहतरीन व शानदार ऑफर, जहां पर एक्सक्लूसिव ड्रेसेस पर 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। खवातीन के लिए शानदार व खूबसूरत ड्रेसेस एक ही छत के तले। फिजा एक्सक्लूसिव पर 70% डिस्काउंट का ऑफर 21 मार्च से 25 मार्च तक रहेगा। खवातीन से गुजारिश है इससे इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ पर खड़ा दुपट्टा, शरारा, हाफ साड़ी, सूट मटेरियल, रेडीमेड टेल कट घाघरा, लॉन्ग कोटी शरारा, गर्ल्स एथिक वेयर या फिर आप ऑर्डर देकर भी अपना ड्रेस बना सकते हैं। अभी तशरीफ लाए फिजा एक्सक्लूसिव नया पुल पर और 70% डिस्काउंट से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता है न्यू बलाला कॉम्प्लेक्स, नया पुल रोड, हैदराबाद। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 6309190999 पर।